Hello student, today we will start our 13 chapter direct and inverse proportion. So exercise 13.1. Here we have to find following are the charges near the railway station is given, and we have to show that these charges are in direct proportion. सो मीन्स टाइमिंग यहाँ पे दे रखी है कि 4 आवर्स के लिए जो अगर हमें पार्किंग में गाड़ी लगानी है, कार लगानी है, तो उसके लिए चार्जेस 60 रुपीज़ हैं। 8 आवर्स के 100 रुपीज़ हैं, 12 आवर के 140 रुपीज़ हैं, 24 आवर्स जो हैं उसके लिए 180 रुपीज़ है। तो हमें बताना है कि क्या ये जो चार्जेस हैं, चार्जेस और पार्किंग टाइम जो है, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। सो फॉर दैट वी विल कैलकुलेट द चार्जेस पर आवर। तो पर आवर में कितने चार्जेस हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। सो C1 इज इक्वल टू चार्जेस C1 इज दैट इज charges C1 is equal to for 4 hours charges are 60 rupees, and for 1 hour we can calculate. So 1 hour के लिए क्या आ जाएगा 60 by 4, एंड दिस इज़ ₹15। ऐसे ही हम सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे। 8 आवर्स चार्जेस फॉर 8 आवर्स इज ₹100। सो मीन्स C2 इज इक्वल टू चार्जेस फॉर मीन्स 4 charges for 8 hour. Here you can write 8 hour. So here after calculation we get charges are, you can solve this, 100 upon 8, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 25 rupees, we get 25 rupees. So charges for 8 hour, यहाँ पे 8 आवर के लिए दिए हैं। 1 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं चार्जेस पर आवर। दीज आर द चार्जेस, 100 रुपीज़ चार्जेस फॉर 8 आवर, एंड फॉर 1 आवर के लिए अगर हमें ज़्यादा के लिए पता है, 1 के लिए कैलकुलेट करना है, तो हम डिवाइड कर देंगे एंड वी गेट दिस 25 रुपीज़। ऐसे ही थर्ड वन इज़ देयर 12 आवर्स फॉर 140 रुपीज़। 12 आवर फॉर 12 आवर देयर चार्जेस आर 140 रुपीज़। सो C3 is equal to 140 upon 12, that is you can divide it, 12 ones are 12, 2 12 ones are 12, we get this 12 6 are, so 11.67 rupees. In the same way this C4 is that is there are charges 180 rupees for 24 hours. For that C4 is equal to 18 rupees, 180 upon 24, we get 7.5 rupees. So you can see here the charges are this charges are 15 rupees, here 25 rupees, 11.67 rupees, 7.5 rupees. So these all are not equal. It means the charges are not in direct proportion to the parking time. So next question is that is given that a part of red pigment is given, a part of red pigment is part, this is, and the part of the base is, the part of base is 8 here, and there should be in all these boxes there should be this base is given in your statement, that base is always 8. Base is the part of the base is, in every case part of the base is 8. So how we can here 8? So you can see in the table 4, 4 ones are 4, and 32 should be there. 4 8s are 32, 7 8s are 56, 12 8s are 7 8s are 56, 12 8s are 96, 28s are 160. So these quantity should be there. How we can write here A1 upon A2, this is given 1 by 8, and to get 8 here and 1 here, 1 portion of this red pigment and 8 portion of this, so 4 ones are 4
and 4 8s are 32, means we have to write here 32. 4 1s are 4, 4 8s are 32. 7 1s are 7, 7 8s are 56. So we will write here 56. So 7 upon 56 is equal to 1 by 8. Again here is 12 by 96. So 12 ones are 12, 12 8s are 96. In the same way 20 upon 160. So 20 upon 160 means 20 ones are 20, 20 8s are 160. So in every case we get the ratio 1 by 8. In this case 1 by here 1 by 8, 1 by 8, 1 by 8. So how we get 1 by 8, 1 by 8? By putting here the value. We know 4 ones are 4 and 4 8s are 32. Here we will write 32. Here we will write 56. Then we will solve this. 12 upon 96, 20 upon 160. So these are in direct proportion. In the next question, also there is given the part of red pigment is there, and red pigment there is the base is of 75, means here we have to calculate the part of the red pigment for red pigment mixed with 1800 milliliters. Base is given 1800 milliliter. Here the one pigment, this is the part of one part of the red pigment dissolve in 75 milliliter of the base. One pigment mixed with 75 milliliter of the base. And how many pigment, statement is how many pigment is mixed with 1800 milliliter. So means we have given 1 liter में 1 पिगमेंट जो है वो 75 मिलीलीटर में डिज़ोल्व हो रहा है. तो बोला कि कितने रेड पिगमेंट, अगर 1800 मिलीलीटर सोल्यूशन होगा तो उसमें कितने पिगमेंट होंगे. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखो 1 पिगमेंट जो है 75 मिलीलीटर में डिज़ोल्व हो रहा है. तो कितने पिगमेंट डिज़ोल्व होंगे 1800 में. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. हम लिखेंगे यहाँ पे 1/75 किसके इक्वल होना चाहिए, x अपॉन 1800 के. और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी. तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 75x 1 into 1800. So from here x is equal to 1800 upon 75. We can solve this. 1800 upon 75, 1800 upon 75. 5, this will solve, cut with 7, this table of 5. 5 1s are 5, 2 5 5s are 25, 5 3s are 15, 5 6s are 30, and 0 we get 15. And here 15 15 1s are 15, 15 2s are 30, we get 6, 60, 15 4s are 60. So we get x is equal to 24, means x is equal to 24 means 24 pigment will dissolve in 1800 milliliter. This is a base is given in 75 milliliter. There is one pigment dissolve here, and how many pigment will dissolve in 1800 milliliter, that is 24.